Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadada Shivasadi Gaura Bhaktavrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaur Hari Bol. Jai Jagannath, Jai Jagannath, Jai Baladeva, Jai Subhadra. Jai Jagannath, Jai Jagannath, Jai Baladeva, Jai Subhadra. Jagannath Swami Nayana Patadami, Nayana Patadami, Baba Tume. Jagannath Swami Nayana Patadami, Nayana Patadami, Bhavam Tume.
Jai Jagannath, Jai Jagannath, Jai Baladeva, Jai Subhadra. Jai Jagannath, Jai Jagannath, Jai Baladeva, Jai Subhadra. Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada. Jai Prabhupada. Jai Guru Deva, Jai Guru Deva, Guru Deva, Guru Deva. Jayam Vishnupad Pranamsa Parivagacharya Stotarsta Shishimad Divine Grace Sri Bhaktivedanta Swami Prabhupada Ki Grantaraj Srimad Shri Chaitanya Charitamrita Ki Srila Prabhupada Patit Pavan Ki. All glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to Shri Shri Guru and Shri Gauranga. Krishna Prestha Bhuttadesh. Okay, so you speak Hindi, yeah? Translate, huh? Do you have any announcement, like today's festival? We already made in the morning program. Okay. They know that today is Jagannath Mishra. Everybody is here for that. Okay. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Dvaita Chanda Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Dvaita Chanda Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Dvaita Chanda Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Dvaita Chanda Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Krishna Krishna Hare Hare. Hare Ram 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 Hare Hare. So today, you want something? Today we read from Sri Chaitanya Charitamrita. आज हम पाठ करेंगे श्री चैतन्य चरितामृत से Adi Lila आदि लीला से 13, chapter 13, text number 59 and 60. तो अध्याय संख्या 13 और जो श्लोक संख्या प्यार संख्या है वो है 59 और 60. You follow the verse? There's a board with the verse? No? No
You repeat the verse, no? सो आप अपने अपने मोबाइल्स में निकाल सकते हैं You आदि want to लीला repeat? It's very easy, yeah? Jagannath Mishra Padavi Purandara जगन्नाथ विप्र होए पदवी पुरंदरा Jagannath Mishra Padavi Purandara जगन्नाथ मिश्र बड़ा पदवी पुरंदरा Nanda Vasudeva Rupa Sadguna Sagara नंदा देवासुपा सद्गुण सारा Nanda Vasudeva Rupa Sadguna Sagara नंदा वसुदेव गुण Jagannath Mishra Padavi Purandara जगन्नाथ विश्व पदवी पुरंदरा Nanda Vasudeva Rupa Sadguna Sagara नंद वासुदेव रूपा सद्गुण सागर Okay. जगन्नाथ मिश्र पदवी पुरंदरा Jagannath Mishra Padavi नंद Purandara वासुदेव रूपा सद्गुण सागर Nanda Vasudeva Rupa Sadguna Sagara जगन्नाथ मिश्र पदवी पुरंदरा जगन्नाथ मिश्र नंद वासुदेव रूपा सद्गुण सागर जगन्नाथ ईश्वरा पदवी पुरंदर Jagannath Mishra Padavi Purandara वासुदेव रूप सदगुण सागर Nanda Vasudeva Rupa Sadguna Sagara. Ladies, Jagannath Mishra Padavi Purandara Vasudeva Rupa. Word by word, you do. जगन्नाथ मिश्र वर जगन्नाथ मिश्र वर जगन्नाथ मिश्र जो सातों में मुख्य थे पदवी ओदा पुरंदरा वासुदेव का एक और नाम नंद कृष्णा के पिता वासुदेव कृष्णा के पिता रूपा जैसे सद्गुणा अच्छी क्वालिटीज सागरा सागर. Translation of the verse. Jagannath Mishra was designated as Purandara, exactly like Nanda Maharaj and Vasudeva. He was an ocean of all good qualities. अनुवाद. जगन्नाथ मिश्र को पुरंदर का पदवी दिया गया था वैसे ही जैसे नंद महाराज और वसुदेव उन्हीं की तरह उनके वो भी अच्छे गुणों का सागर थे. So now verse 60. Tanra patni sachinama pativrata sati. तान पत्नी सची नाम प्रतिव्रता सती. Tanra patni sachinama pativrata sati. तान पत्नी सची नाम प्रतिव्रता सती. Yana pita nirambara nama chakravarti. ज्ञान पिता नीलांबर नाम चक्रवर्ती. Yana pita nirambara nama chakravarti. ज्ञान पिता नीलांबर नाम चक्रवर्ती. Tanra patni sachinama pativrata sati. तन्रापति सती नाम तन्वीरता सती. Yana pita nirambara nama chakravarti. ज्ञान पिता नीलांबर नाम चक्रवर्ती. तांड्रापत पत्नी सची नाम पतिव्रता सती. Tanra patni sachinama pativrata sati. ज्ञानपति नीलांबर ज्ञान पिता नीलांबर नाम चक्रवर्ती. Yana pita nirambara nama chakravarti. Can read the word by word. वर्ड मीनिंग एंड You go. शब्दार्थ. तांड्र पत्नी
उनकी भार्या सची सची नाम नाम पतिव्रता अपने पति को समर्पित सती सती यानरा जिनकी पिता पिता नीलांबर नीलांबर नाम जिनका नाम चक्रवर्ती जिनका टाइटल चक्रवर्ती था। Translation. His wife, Srimati Sachi Devi, was a chaste woman, highly devoted to her husband. Sachi Devi's father's name was Nilambara, and his surname was Chakravarti. उनकी पत्नी श्रीमती सची देवी जो बहुत ही सती स्त्री थी, अपने पति को पूर्णतया समर्पित थी। सची देवी के पिता का नाम नीलांबर था और उनका उपनाम चक्रवर्ती था। Purport by His Divine Grace S.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur writes in his Anubhasya in the Gora Ganodesh Dipika 104, it is mentioned that Nilambar Chakravarti was formerly Gargamuni, son of the family descendants of Nilambar Chakravarti, still live in the village of the name Magdoba, in the district of Faridpur in Bangladesh. His nephew was Jagannath Chakravarti, also known as Manu Thakur, who became a disciple of Pandita Goswami and stayed at Jagannath Puri as the priest of Tota Gopinath. Nilambar Chakravarti lived at Navadvip in the neighborhood of Belapukuria. This fact is mentioned in the book Prema Vilas. Because he lived near the house of the Kazi was also considered one of the maternal uncles of Lord Chaitanya Mahaprabhu. The Kazi used to address Nilambar Chakravarti as Kaka, uncle. One cannot separate the residence of the Kazi from Vamanapukur, because the tomb of the Kazi is still existing there. Formerly, the place was known as Belapukuria, and now it's called Vamanapukur. This has been ascertained by archaeological evidence. अनुवाद तात्पर्य। शील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर अपने अनुभाष्य में लिखते हैं, गौर गणोदेश दीपिका में उल्लेख है कि नीलांबर चक्रवर्ती पहले गर्ग मुनि थे। नीलांबर चक्रवर्ती के कुछ पारिवारिक वंशज अभी भी बांग्लादेश के फरीदपुर जिले में मगोबा नाम के गांव में रहते हैं। उनके भतीजे जगन्नाथ थे, जिन्हें मामू ठाकुर के नाम से जाना जाता था, जो पंडित गोस्वामी के शिष्य बन गए और टोटा गोपीनाथ के पुजारी के रूप में जगन्नाथपुरी में रहे। नीलांबर चक्रवर्ती बेलपुकुर के पड़ोस में नवद्वीप में रहते थे। इस तथ्य का उल्लेख प्रेम विलास पुस्तक में किया गया है। चूंकि वह काजी के घर के पास रहते थे, इसलिए काजी को भगवान चैतन्य के मामाओं में से एक माना जाता है। काजी नीलांबर चक्रवर्ती को काका या चाचा कहकर संबोधित करते थे। काजी के निवास को वामनपुकुर से अलग नहीं किया जा सकता, क्योंकि काजी की समाधि अभी भी वहां मौजूद है। पहले इस स्थान को बेलपुकुरिया के नाम से जाना जाता था, अब इसे वामनपुकुर कहा जाता है। पुरातात्विक साक्ष्यों से यह पता चलता है। ओम अज्ञानातिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। So, dear devotees of Rohini Mandir, that's how we call it. Yes. I'm very glad to be here with you today.
तो मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है आप सभी प्रिय भक्तों के बीच में, रोहिणी मंदिर के प्रिय भक्तों के बीच में। And although I didn't visit the place yet, but I came here 7 years ago with Radha Gokulananda Maharaj. तो मैं इससे अभी मैं पूरा घूमा नहीं हूँ, पर मैं लगभग 7 साल पहले यहाँ आया था राधा गोकुलानंद महाराज के साथ। But then I saw only concrete. उस समय मैंने सिर्फ यहाँ कंक्रीट ही देखा था, And now I see happy faces. और अब मैं देख रहा हूँ कुछ हंसते हुए चेहरे। So it's completely mystical the way from the concrete the happy faces go. तो ये बहुत ही जादुई है कैसे कंक्रीट से बहुत ही मुस्कुराते चेहरे उत्पन्न हो गए हैं। So I came 7 years ago, and yeah, it was really. How many of you were there 7 years ago? लगभग 7 साल पहले कितने लोग थे यहाँ पर? Oh, quite a few, huh? The pioneers. तो आप लोग ही हैं जिन्होंने शुरुआत करी थी। I'm sure Srila Prabhupada is so pleased with your service, so pleased. तो मुझे यकीन है कि प्रभुपाद जी आप सबकी सेवाओं से बहुत प्रसन्न होंगे। You are like pioneers in such a big city as Delhi. We need to claim so many thousands of souls, and temples are required. तो आप सभी हैं जिनकी वजह से दिल्ली में इतने सारी जीवात्मा का उद्धार हो रहा है, इतने सारे मंदिर बन रहे हैं। So today we are celebrating Jagannath Mishra's festival. तो आज हम जगन्नाथ मिश्र का जो उत्सव है वो मना रहे हैं। Jagannath, father of Nimai, yesterday was Nimai, Gora Purnima. जगन्नाथ मिश्र जो है वो निमाई के पिता हैं, और कल गौर पूर्णिमा हमने मनाया है। So there is not much said in Sri Chaitanya Charitamrita about the father of Nimai. तो चैतन्य चरिता में हमें ज़्यादा कुछ जगन्नाथ मिश्र के बारे में प्राप्त नहीं होता है। We selected only these 2 verses. सिर्फ यही 2 वर्सेस हम चुन पाए। Talking about, there is much more said about Sachi Devi in the whole Chaitanya Charitamrita. ज़्यादा बताया गया है सची देवी के बारे में अन्य ग्रंथों में भी। At some way or other, that does not mean that Jagannath Mishra was not very important. पर इसका मतलब ये नहीं है कि जगन्नाथ मिश्र कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति नहीं थे। And Krishnadas Kaviraj Goswami has made the point to draw the Gotra of Jagannath Mishra. तो और यहाँ पर जो कृष्णदास कविराज गोस्वामी हैं वो जगन्नाथ मिश्र के गोत्र के बारे में बता रहे हैं। So the father of Jagannath Mishra was Upendra Mishra, who had 7 sons. तो जो जगन्नाथ मिश्र के जो फादर है उपेंद्र मिश्र, उनके 7 बेटे थे। And it is said that the 7 sons of Upendra Mishra were all very saintly, very saintly devotees. और ऐसा बताया गया कि 7 जो बेटे थे उपेंद्र मिश्र के, वो सभी साधु व्यवहार करने वाले साधु के गुणों वाले थे। Then, who was Upendra Mishra? फिर प्रश्न उठता है कि उपेंद्र मिश्र कौन थे? In the purport of the verse 56, Prabhupada is telling us that he is described in the Gora Ganodaj Dipika as the Gopal named Parjanya. ऐसा गौर गणोज दीपिका में उल्लेख होता है कि वो एक गोप थे जिनका नाम परजन्य था। So connections are there, always connections between the Gora Lila and the Krishna Lila. तो आप देखेंगे हमेशा आपको कुछ सूत्र मिलेंगे दोनों ही गौर लीला में और कृष्ण लीला में। Because that same personality was formerly the grandfather of Lord Krishna. He appeared now as Upendra Mishra. तो ये वही व्यक्ति हैं जो भगवान कृष्ण के दादा होते हैं कृष्ण लीला में, वही यहीं पर अवतरित होते हैं उपेंद्र मिश्र के रूप में। So when Krishna comes in this world, he never comes alone.
as we know that. तो हम ये जानते हैं कि जब कृष्ण इस धराधाम पर आते हैं तो वो अकेले नहीं आते हैं. He always comes with his devotees, and even often his devotees come first. और वो अपने भक्तों के साथ आते हैं और ज़्यादातर उनके भक्त उनसे पहले आते हैं. They come to set up the scene of his advent. तो वो भगवान कृष्ण के आने से पहले सारे अरेंजमेंट करने के लिए आते हैं. And you know that it's always very, very dramatic. As for Krishna's advent, very dramatic. और हर बार जैसा कि होता है कृष्ण का जो प्राकट्य होता है वो बहुत ही नाटकीय होता है. So when Krishna decided to come on this planet Earth, he came after mature contemplation, it is said here. तो ऐसा बताया गया यहाँ पर कि जब कृष्ण इस धराधाम पे आने का सोचते हैं, पृथ्वी ग्रह पर आने का सोचते हैं, तो बहुत ज़्यादा सोच विचार करते हैं पहले. First, a family of superiors had to descend on earth, and these were companions of Krishna in the spiritual world. तो सबसे पहले जो सीनियर होते हैं वो पहले आते हैं, जो गोलोक वृंदावन में भगवान के माता पिता इत्यादि की भूमिका निभाते हैं. Not only Mata Pita, but the list is given here. सिर्फ माता पिता ही नहीं और भी लिस्ट यहाँ दी गई है. Lord Krishna, verse 54-55. Lord Krishna, before appearing as Lord Chaitanya, requested these devotees to precede him. Shri Sachidevi, Jagannath Mishra, Madhavendra Puri, Keshava Bharati, Ishvara Puri, Adwaita Acharya, Shrivasa Pandit, Acharya Ratna, Vidyanidhi, and Haridas Thakur. तो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आने से पहले इन भक्तों से साथ चलने की प्रार्थना करते हैं. श्री सची देवी, जगन्नाथ मिश्र, माधवेंद्रपुरी, केशव भारती, ईश्वरपुरी, अद्वैताचार्य, श्रीनिवास पंडित, आचार्य रतन, विद्यानिधि और ठाकुर हरिदास. So another verse says, Lord Krishna, Rajendra Kumar, first caused countless devotees to appear, and at last he appeared himself. तो यहाँ ऐसा भी बताया गया है कि भगवान कृष्ण बहुत सारे भक्तों को पहले अवतरित होने के लिए कहते हैं और फिर आखिर में वो खुद अवतरित होते हैं. It's like if you go to theater, the main actor, the hero of the play will come after all the others come on stage. तो जैसे अगर आप कोई थिएटर में नाटक देखने जाएं तो आप देखें कि जो प्रमुख व्यक्ति होता है वो स्टेज पर थोड़ी देर बाद आता है, पहले अन्य कलाकार आते हैं. Then all the lights are on him who appears at last. तो सबसे आखिर में वो बिल्कुल बड़े नाटकीय रूप में प्रकट होते हैं. But it doesn't mean that all these other companions who came before were not also big lights. पर इसका मतलब ये नहीं है कि जो इनसे पहले आए हैं वो कलाकार उनको भी लाइट दी जाती है, उनको भी बड़ी लाइटें दी जाती हैं. So that's amazing how Krishna is appearing in this world. Some people say, no, God cannot come in this world. This world is a mess. तो ये बहुत ही आश्चर्यजनक है कि कैसे कृष्ण इस भौतिक संसार में अवतरित होते हैं. कई लोग ऐसा बोलते हैं कि नहीं भगवान तो आ ही नहीं सकते इस भौतिक संसार में. Yeah, when you are in a jail, you see everything around as only the jail. You cannot escape. You don't have any understanding of what freedom is. तो जब आप जेल में होते हैं तो आप वही देखते हैं जो जेल में हो रहा होता है. आपको आज़ादी, स्वतंत्रता इसकी कोई एहसास ही नहीं होता है. So the understanding of many people living in this world is that there is no God. Everything is the same as us here. तो ऐसे जो जीव इस भौतिक संसार में रह गए उनकी ऐसी मानसिकता होती है कि ऐसा भगवान जैसा कोई नहीं है, जो कुछ भी है वो हम जैसे ही लोग हैं. And so because they are frustrated, because they have a limited vision, because their intelligence can grasp only very, very, very little, then there is no God. तो क्योंकि वो उनका जो
दृष्टिकोण है वो बहुत छोटा है, क्योंकि उनकी समझ बहुत छोटी है, तो इसलिए वो सिर्फ इतना ही मानते हैं कि भगवान जैसा कुछ भी नहीं है। But as devotees, we have another understanding. पर भक्त होने के कारण हमारी अलग मानसिकता है। We have the understanding that God's unlimited lila pastimes are going on all the time, all the time, all the time, everywhere in the universe. पर भगवान के भक्त होने के कारण हमारी जो मानसिकता है कि भगवान की जो असंख्य लीलाएं हर समय हो रही हैं इस ब्रह्मांड में, अलग अलग कई ब्रह्मांडों में अलग अलग जगह। And sometimes out of His mercy, unlimited mercy, God, the Supreme Personality of Godhead, He desires to show special mercy to a special universe, special planets, special people. He comes. तो अपनी अहेतुकी कृपा के कारण भगवान परम पुरुषोत्तम भगवान कई बार किसी एक ब्रह्मांड में, किसी भाग्यशाली ब्रह्मांड में, किसी भाग्यशाली ग्रह पर कुछ भाग्यशाली लोगों के सामने प्रकट होना स्वीकार करते हैं। But He cannot come anywhere and everywhere. He has to select places. पर वो कहीं भी और कैसे भी नहीं आ जाते हैं, वो एक स्थान अपना चुनते हैं। Yesterday we had a lecture at the Easter Kailash temple, and one person in the audience was asking a question: why is God coming to India? तो कल हम ईश्वर कैलाश मंदिर में प्रवचन कर रहे थे और वहाँ एक व्यक्ति ने प्रश्न पूछा कि भगवान इंडिया में ही क्यों आते हैं, भारत में ही क्यों आते हैं। That's a good question, no? बहुत अच्छा प्रश्न है ये। Why He doesn't come anywhere else in the world? तो भगवान इस दुनिया में और किसी जगह क्यों नहीं आते हैं? Anybody has any answer? आप में से किसी का कोई जवाब है? Why Bharat? भारत ही क्यों? Yeah. So these places chosen by Lord Krishna to appear are places where He already had pastimes. तो भगवान ने ऐसे स्थानों को इसलिए चुना है क्योंकि यहाँ पर पहले भी वो लीला करते रहे हैं। He doesn't put His feet anywhere and everywhere. वो हर जगह अपने कदम नहीं रखते ऐसे ही। So yeah, Bharat, India has plenty of places related to leaders, to leader stands, recent ones or very old ones. तो ऐसे बहुत सारे लीला स्थलियाँ हैं भारत भूमि पे, जो अभी कुछ नवीन भी है और कुछ पुरानी भी हैं। In the West, people cannot even relate to the fact that God is coming in this world. So how can they relate to places where He could have pastimes? Impossible. तो पाश्चात्य देशों में लोग ऐसा सोच भी नहीं सकते हैं कि भगवान इस भौतिक संसार में आते हैं, तो वो कैसे इस चीज़ को मानेंगे कि भगवान किसी स्थान पर आते हैं, उस स्थान के प्रति कैसे समर्पित होंगे। In the West, you have places of worship as well, but mostly related to saints who had a vision. What vision? This is to be explained a little bit. Not a vision of God, but we can explain more. तो जो पश्चात्य देशों में कुछ धार्मिक स्थल होते भी हैं, तो वो धार्मिक स्थल कहलाए जाते हैं क्योंकि वहाँ पर कुछ साधु, कुछ संत वहाँ पर आए थे, और जिनको ऐसे साधु संत जिनको भगवान का कुछ दृष्टिकोण प्राप्त हुआ, कुछ इस तरीके से। Vision of Holy Virgin, Mother Mary, vision of Christ. Not so many people get to that point. तो ऐसे लोग जिनको कुछ दर्शन प्राप्त हुए मदर मैरी के, या कुछ ही लोग ऐसे हैं जिनको क्राइस्ट के, बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जिनको क्राइस्ट के दर्शन प्राप्त हुए। Very, very few have visions of Christ. बहुत ही कम ऐसे लोग हैं जिनको क्राइस्ट के दर्शन हुए। So they have some visions maybe of some devotees of Christ, but not so much of Christ Himself. तो ऐसे लोग हैं जिनको क्राइस्ट के भक्तों के दर्शन प्राप्त हुए, पर क्राइस्ट के दर्शन बहुत ही कम लोगों को प्राप्त हुए। So already this is something, when people have a vision of a pure devotee, then it becomes a tirtha. In the West, I'm talking. When there is someone has a vision of a devotee of God, or they think like that,
because they think that Krishna is God, that Christ is God. So this becomes, a place of worship. तो वहाँ पाश्चात्य देशों में उस स्थान को पूजनीय माना जाता है जहाँ पर किसी व्यक्ति को भगवान के किसी भक्त के दर्शन हुए होते हैं. So, but see the difference here. We have in India not only places where Chaitanya Mahaprabhu 500 years ago came, but we have Lilastan, as old as 5,000 years back, Krishna Lilastan. तो भारत में वहीं हम भारत में अगर देखें तो हमें ना सिर्फ वो स्थान प्राप्त होते हैं जहाँ श्री चैतन्य महाप्रभु अवतरित हुए थे 500 साल पहले, उसी के साथ साथ हमें ऐसे भी लीला स्थान प्राप्त होते हैं जो आज से 5000 साल पहले जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लीलाएं करी थी. And not only we have Lilastan which are 5,000 years old, we have Lilastan which are millions of years old. Ayodhya, for instance. तो ना सिर्फ हमें 5000 साल पुराने लीला स्थान प्राप्त होते हैं जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने लीलाएं करी थी, साथ ही साथ हमें लाखों साल पुराने लीला स्थान भी प्राप्त होते हैं जैसे कि अयोध्या. So you see the history of Lilastan in India, no one can match it. No one can match this around the world. तो क्योंकि हम यहाँ पे जो इतिहास से जुड़े हुए इतने सारे लीला स्थान भारत में ही हैं, तो इसलिए और कोई भी जगह ऐसी नहीं है जो इसके साथ जिसको कंपेयर किया जा सके. So yes, we can say that God likes to come in this country. तो हम ये कह सकते हैं कि हाँ, भगवान को पसंद है इस देश में आना. But at the same time, He is not restricted just to this country. पर साथ ही साथ वो सिर्फ इसी देश में आने के लिए बाध्य नहीं है. This is why now He's appearing all over the world. तो इसी कारण से अब वो पूरे विश्व में प्रकट हो रहे हैं. Because now Krishna is appearing as a holy name in all countries of the world. तो इसलिए जो भगवान श्री कृष्ण है वो हरि नाम के रूप में पूरे विश्व में प्रकट हो रहे हैं. Hari Bol. हरि बोल. So there are some religions which are still waiting for the Messiah to come. और ऐसे भी कुछ धर्म हैं जो अपने मसीहा के आने का इंतजार कर रहे हैं. And they are fighting like anything. और वो लड़ रहे हैं बहुत भयानक तरीके से. Because their Messiah is not the same Messiah as the neighbor. क्योंकि उनका जो मसीहा है वो उनके पड़ोसी के मसीहा के जैसा नहीं है या वो नहीं है. So they are fighting like cats and dogs, just because they say this land belongs to us, not to you. तो वो ऐसे इस तरीके से बहुत ही भयानक तरीके से लड़ाई कर रहे हैं क्योंकि वो कहते हैं कि ये जो स्थान है ये हमारे लिए है, ये हमें बिलोंग करता है. And they are waiting for the Messiah to come. और वो अपने मसीहा के आने का इंतजार कर रहे हैं. But then we may wonder, but he's never coming. Where is he? पर हम ये सोचते हैं, हम ये आश्चर्यचकित होकर सोचते हैं कि वो कब आएगा. And fanatics, religious fanatics don't want to see the devotees chanting in the streets of their town. पर ऐसे धार्मिक कट्टरपंथी होते हैं, वो भक्तों को बर्दाश्त नहीं कर सकते जब भक्त उनके शहर में कीर्तन करते हैं. They will not see that the holy name is coming to them. This is God coming to them. They won't see that. They are blind. तो देख नहीं पा रहे हैं, वो बिल्कुल अंधे की तरह हैं क्योंकि वो देख नहीं पा रहे हैं कि कैसे भगवान हरि नाम के रूप में उन तक आ रहे हैं. So the special mercy of Krishna in this age is that He comes everywhere, anywhere. तो एक खास Patita pavana hetu tava havatara. He is coming everywhere. तो एक खास कृपा है भगवान श्री कृष्ण की कि वो हरि नाम के रूप में हर तरफ आ रहे हैं. पतित पावन हेतु तव अवतार, हर तरफ आ रहे हैं भगवान श्री कृष्ण. He is not discriminating for anybody. Everybody is fit to receive the Lord's mercy. तो किसी के साथ भी कोई भेदभाव नहीं कर रहे हैं. हर कोई व्यक्ति योग्य है भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त करने के लिए. So in the same way that Krishna appeared in a jail in Mathura, Lord Chaitanya is also coming in the, very advanced stage of Kali Yuga, which we can compare to a jail also.
तो जैसे कि हम जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जेल में अवतरित हुए थे, तो ऐसे ही भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु इस कलयुग के बहुत ही एडवांस टाइम पर आ रहे हैं, तो वो बिल्कुल जेल के जैसा ही है। Jail in the sense that people are so, caught up with shackles. Prabhupada used to talk about the shackles of sex life, shackles, which bind you to this world. तो जेल इसलिए बोला गया है क्योंकि जो लोग हैं वो बंधे हुए हैं, वो जंजीरों से बंधे हुए हैं यौन क्रिया की। जो प्रभुपाद ऐसा बताते हैं कि जो कलयुग के जो लोग हैं वो यौन क्रिया के जंजीरों से बंधे हुए हैं। And it becomes so intense, these shackles, the most Kali Yuga advances. तो जैसे जैसे कलयुग बढ़ता जाएगा ये जो जंजीरें हैं और भी ज़्यादा बड़ी होती जाएंगी। For most people, at least in the Western world, the only goal of life is sex life. तो बहुत से लोग खासकर पाश्चात्य देशों में उनके जीवन का लक्ष्य ही यही है, यौन क्रिया। So they are being shackled in their jail, they cannot see further than the jail, and then we come. The chanting of the holy name is coming. क्योंकि वो उस जेल में जंजीरों से बंधे हुए हैं और सिर्फ वहीं तक ही देख सकते हैं जहाँ तक जेल की दीवारें उन्हें देखने देती हैं, और फिर भक्त लोग आते हैं वहाँ पे हरि नाम लेकर। So first he came in the mind, in the heart, in the consciousness of Vasudeva, then went to Devaki, to the womb of Devaki. तो पहले वो वसुदेव के मन में आए, फिर हृदय में आए और फिर चेतना में आए, और वहां से वो स्थानांतरित हुए देवकी के गर्भ में। The same happened here with Jagannath Mishra and Sachi Devi. और ऐसा ही हुआ जगन्नाथ मिश्र और सची देवी के साथ। So in order to appear in the mind, in the consciousness, those persons receiving the Lord, accepting the Lord as their son, must be very, very, very elevated souls. तो इसलिए हमें जानना चाहिए कि कैसे जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण को अपने पुत्र के रूप में प्राप्त कर रहे हैं वो बहुत 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 खास व्यक्ति हैं। मच्चित्ता मद्गत प्राणा बुरायंता परस्परम कतायम तिच्छाम नित्यम तुष्यम तिच्छारमंतिच्छा। My devotees, the thought of my pure devotees dwell in me, their lives are fully devoted to my service, and they derive great satisfaction and bliss from always enlightening one another and conversing about me. तो मेरे भक्तों के विचार हमेशा मुझ में रमे रहते हैं, उनका जीवन पूर्णतः से मुझ पर समर्पित होता है, और वो आपस में मेरे बारे में चर्चा करने बहुत दिव्य आनंद का अनुभव करते हैं। तेषाम एव अनुकंपाताम अहम अज्ञानस्नाम तमा नश्यामि आत्मा भवस्तो ज्ञानादीपेना Bhagwata. To show them special mercy, I, dwelling in their hearts, destroy with the shining lamp of knowledge the darkness born of ignorance. तो उन पर खास आध्यात्मिक कृपा देने के लिए मैं उनके हृदय में जो मैं उनके हृदय में रहता हूँ उनको खास ज्ञान की रोशनी दिखाकर उनके इग्नोरेंस के अंधकार को दूर करता हूँ। So Krishna shows special favor to his pure devotees, and when they receive him, when they accept him in their heart, they can do wonders. तो भगवान श्री कृष्ण जो अपने शुद्ध भक्त के पर बहुत ही ज़्यादा कृपा करते हैं, और जो उनको इस तरीके से अपने हृदय में आमंत्रित करता है उसको खास कृपा प्राप्त होती है। So this movement, Krishna consciousness movement, is a lot about giving and receiving. तो ये जो कृष्ण भावनामृत का जो आंदोलन है ये लेने और देने का आंदोलन है। We should be qualified enough to be able to receive Krishna in our hearts. तो हमें इतना योग्य होना चाहिए, जरूर होना चाहिए कि हम कृष्ण को अपने हृदय में बुला सकें, ले सकें। So we see mercy in so many ways. Guru Kripa, Vaishnav Kripa, Krishna Kripa, so many ways we get the mercy. तो हमें बहुत ही अन्य रूपों में कृपा प्राप्त हो रही है, गुरु से कृपा, कृष्ण से कृपा, वैष्णव से कृपा। So but all these we have to be able to receive, to qualify ourselves to receive. Prabhupada said to
Vishnu Jan Swami at the beginning of the movement in the 1970. He said, because there was a question given to him, तो हमें योग्य होना चाहिए इस कृपा को प्राप्त करने के लिए। प्रभुपाद जी अपने शिष्य विष्णुजन स्वामी से वार्तालाप में जो लगभग 1970 में हुई थी उसमें इस प्रकार बताते हैं। the question I can't remember exactly, but it was about receiving the mercy of the Guru. तो मुझे प्रश्न तो अच्छे से याद नहीं है, पर ये वो लगभग इसी तरीके से था कि गुरु से कृपा कैसे प्राप्त करें। And Prabhupada's answer is very interesting. He said, I give equally to all of you, but some are more enthusiastic to receive and apply. तो प्रभुपाद जी ने उत्तर दिया कि मैंने सबको बराबर ही बांटा है, पर कुछ लोग हैं जो ज्यादा उत्साहित हैं इस कृपा को प्राप्त करने के लिए। So to qualify ourselves to be a proper receiver of the Guru's mercy, of the Parampara's mercy, this is our challenge in the life of a devotee. तो हमें अपने आप को योग्य बनाना है गुरु की कृपा प्राप्त करने के लिए, परंपरा की कृपा प्राप्त करने के लिए। ये हमारे सामने चुनौती है। And the more you qualify yourself to receive Guru's mercy, Vaishnava's mercy, Krishna's mercy, then the more you're able to give it to others. तो जितना आप अपने आप को योग्य बनाते हैं गुरु की कृपा प्राप्त करने के लिए, वैष्णव की कृपा प्राप्त करने के लिए, उतना ही आप योग्य बनते हैं उस कृपा को आगे देने के लिए। Why are we building temples? हम ये मंदिर क्यों बना रहे हैं? People are building cinemas. People are building shopping malls, big shopping malls. I see in Delhi. Wow, I didn't come for 7 years in India. I see big shopping malls here now. तो यहाँ पर लोग जो हैं बहुत बड़े बड़े सिनेमा हॉल बना रहे हैं, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल बना रहे हैं। मैं लगभग 7 साल बाद इंडिया आया हूँ, तो मैं देख रहा हूँ दिल्ली में बहुत बड़े बड़े शॉपिंग मॉल बन गए हैं। Okay, so what's the difference? क्या अंतर है दोनों में? Yeah, entertainment. People will come here to see wonderful plays, to see beautiful saris, and to get married here. And what is the purpose of these places? तो क्या उद्देश्य है इस स्थान का? लोग यहाँ आएंगे घूमने के लिए, फोटो खींचने के लिए, शादी करने के लिए। I could see yesterday in East Kailash for 2 days, so many young people are coming for Holi. So many, they come painted with their faces, selfie everywhere. तो लगभग पिछले 2 दिन से मैं देख रहा हूँ ईस्ट कैलाश मंदिर में बहुत सारे नवयुवक नवयुवती आ रहे हैं, वो उनके चेहरे पर रंग लगा है और वो सेल्फी खींचे जा रहे हैं। So we can go to the temple president and complain, say, oh, you're putting so many beautiful flowers here, only for the selfies. तो हम जाके टेम्पल प्रेसिडेंट को कंप्लेन कर सकते हैं कि आपने इतने सुंदर सुंदर जो फूल है यहाँ पर ऐसे वेस्ट कर रहे हैं, ये सेल्फियाँ लेने के लिए सिर्फ। Because they always want to be with beautiful flowers in the selfie. क्योंकि वो लोग जो हैं वो सेल्फीज में सुंदर फूलों के साथ ही दिखना चाहते हैं। But when they come to Bhagavan, no selfie. Hello, no selfie. पर वो जब भगवान के सामने आते हैं तो वहाँ सेल्फी लेना अलाउड नहीं है। Yeah. So beauty, yes, they come to a temple to see beauty, but not just the beauty of this world, the supreme beauty. तो वो मंदिर आते हैं सुंदरता को देखने के लिए, पर इस भौतिक संसार की सुंदरता नहीं, आध्यात्मिक सुंदरता। So the challenge is there when we build a temple. It's a big challenge. It's a real big challenge. I wouldn't like to have the position of, the temple president here or the manager of the construction. It's a huge headache. तो ये बहुत बड़ी चुनौती है मंदिर का निर्माण करना। मैं समझ सकता हूँ कि जो मंदिर अध्यक्ष हैं या फिर जो मंदिर के मैनेजर हैं उनके लिए कितना बड़ा सरदर्द है ये। But this headache is so much appreciated by Krishna because it is for his service. तो ये जो सरदर्द है ये कृष्ण के द्वारा बहुत ही सराहनीय है। So we are building big place. We compete with the material world, big malls, big cinema, yes, big temples. तो हम बना रहे हैं, बड़े बड़े मंदिर बना रहे हैं। हम बिल्कुल चुनौती लेते हैं भौतिकवादी लोगों के साथ कि आप बड़े सिनेमा और बड़े शॉपिंग मॉल बनाते हैं, हम बड़े मंदिर बनाएंगे। But we compete because we want them
We want the whole world to come and see the beautiful face of our Lord. तो हम ये चाहते हैं कि हम इतने बड़े बड़े मंदिर इसलिए बनाए ताकि लोग आएं और देखें कि जो भगवान का सुंदर चेहरा है उसको, To see the beautiful smile of Lord Jagannath. तो वो आएं और देखें भगवान जगन्नाथ की सुंदर मुस्कान को। So this is why we are building these places. तो इसलिए हम इन जगहों का निर्माण कर रहे This is हैं। the goal. And when doing that, of course, we do so many other things on the side. It's not only building. We are building our congregation as well. तो हम न सिर्फ मंदिरों का निर्माण कर रहे हैं, उसके साथ साथ हम और भी चीजें कर रहे हैं। हम कांग्रीगेशन को भी बड़ा कर रहे हैं। Because what's the use if you have only walls? If you don't have a congregation to fill in the wall. तो उसका क्या ही महत्व होगा अगर आपके पास सिर्फ दीवारें होंगी और लोग नहीं होंगे उन दीवारों के बीच में आने के लिए। Yeah. So this is very nice, very wonderful, your service here. This is an Inam Sankirtan for a bigger kirtan. तो ये बहुत ही अच्छा है, बहुत ही आश्चर्यजनक है कि आप लोग ऐसा कर रहे हैं और हरिनाम होना चाहिए, ऐसे ही बहुत बड़ा हरिनाम होना चाहिए। Yeah. And so many books can be distributed from this place. Knowledge will be given to thousands and thousands from this place. बहुत ज़्यादा किताबें बांटी जानी चाहिए इस स्थान से और आध्यात्मिक ज्ञान दिया जाना चाहिए हजारों लोगों को। So this is ecstatic. You are part of it. It's better to be part of it than to be on the side watching from far. तो ये बहुत ही एस्थेटिक है और हमें भी हम सबको इसमें भाग लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि दूर खड़े होकर देखते रहें। So again, thank you very much. तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद एक और बार। Any question, comments? किसी का प्रश्न है, कोई कमेंट है? Yes. ये जो जगन्नाथ मिश्र का जो उत्सव है, हम किस तरह से उसको मना सकते हैं बाय स्पिरिचुअली? He is asking that how we can celebrate this Jagannath Mishra festival spiritually. I don't know how they do it in Mayapur. In Mayapur they distribute food, no? Mostly big distribution of prasad. तो आप मायापुर जा सकते थे। मायापुर में जैसे मायापुर में भी मनाते हैं कि वो बहुत ज़्यादा प्रसाद वितरण करते हैं। It's amazing this movement. You know, yesterday I have a movie here. I took a movie of all the preparations in the Easter Kailash temple. तो कल मैंने ईश्वर कैलाश मंदिर में जो इतनी भव्य आयोजन हुए थे उसका मैंने वीडियो बनाया। Huge. Maybe 1,000. I don't know. Maybe, you know, they said a couple of hundred, but to myself it looked like almost 1,000. तो वो कह रहे थे कि कुछ 100 ही हैं, पर मेरे को तो लग रहा था 1000 हैं लगभग। And mostly it was non-Ekadashi food. It was grains. तो जो भगवान को भोग लगाया मोस्टली वो एक अन्न वाला ही प्रसाद था, अन्न वाला भोग था। So we have a big festival. We cook a lot, but we cannot eat the food. So we have to eat the next day. तो ऐसे किसी त्योहार पर हम बहुत ज़्यादा भोग बना सकते हैं पर उसको हम उसी दिन नहीं खा सकते हैं, तो इसलिए हमें कब खाना होगा, उसको अगले दिन खाना होगा। So as it is a big feast, we have to distribute it to so many people. तो क्योंकि ये बहुत ही बड़ा फीस्ट था, बहुत ही भव्य प्रसाद था, तो हम बहुत सारे लोगों को भी बांट सकते हैं। Yeah. Yes, Prabhu. Thank you, Prabhuji, for your wonderful class today. I have one question. Once we are away from Guru Maharaj or any senior Vaishnavas, how can we extend our seva to him? How can we serve to Guru Maharaj, Vaishnavas, once we are not closer to him? सो प्रभु जी का प्रश्न है कि अगर हम जैसे अपने गुरु या किसी सीनियर वैष्णव से दूर होते हैं तो भी हम उनकी सेवा कैसे कर सकते हैं? Why you are so far? You are very close. When you do seva, Guru Maharaj is with you. तो आप दूर कहाँ हैं? आप हमेशा उनके करीब हैं। जब आप सेवा करते हैं तब आप उनके करीब होते हैं। You think that Prabhupada went alone to America? No. आपको क्या लगता है कि प्रभुपाद अकेले अमेरिका गए थे? नहीं। He went with Srila Bhaktisiddhanta.
He was with him all the time. तो वो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के साथ गए थे, हमेशा वो उनके साथ थे। We have to understand the Vani and Vapu so much. You know, so many of us, we didn't see Prabhupada. We didn't. Personally, I came to Vrindavan 1 week after Prabhupada had disappeared from the planet. 1 week. I couldn't see him, I couldn't touch him. He was samadhi. तो हमें वाणी और वपू सेवा दोनों को अच्छे से समझना होगा। मैं खुद प्रभुपाद के जाने के जस्ट 1 हफ्ते बाद वृंदावन आया था, जस्ट सिर्फ 1 हफ्ते बाद। And I was not a devotee at all. I was a tourist. I came by chance in Vrindavan. और उस समय भक्त भी नहीं था, मैं तो सिर्फ एक पर्यटक के तरह आया था और बाय चांस ही बस पहुंच गया था वृंदावन। But somewhere or other, because I was attracted to listen to a devotee who was doing a bhajan on the samadhi, which was just covered with earth. That's all. No, nothing, no pandal, nothing. And I listened to this bhajan close to the samadhi. I got Prabhupada's kripa. तो मैं उस समय वहाँ पर एक जो भक्त थे जो बहुत ही सुंदर भजन गा रहे थे, उस समय वहाँ आज की तरह ऐसा संगमरमर नहीं लगा था, मार्बल नहीं लगा था, सिर्फ वहाँ पर मिट्टी ही थी। और क्योंकि मेरे को मैं वहाँ बैठा, मैंने वो भजन सुना, तो मुझे प्रभुपाद की कृपा प्राप्त हुई। I stayed there 15 minutes listening to that bhajan, and it was wonderful, very attractive, very nice. I was not attracted to Krishna, to the holy name, to anything yet, but I became after. तो उस समय मैं लगभग सिर्फ 15 मिनट वहाँ बैठा था, मैं वहाँ पे कृष्ण से आकर्षित नहीं हुआ, हरिनाम से आकर्षित नहीं हुआ, बस मैं वहाँ बैठा था और वहाँ मुझे कृपा प्राप्त हुई और बाद में मैं भक्त बना। So, yeah, the Guru Kripa is there when again we are able to receive it. We should be in anxiety always to receive Guru Kripa. तो गुरु कृपा हमें तभी मिलेगी जब हम उसको लेने के योग्य बनेंगे। तो हमें हमेशा ये चिंता करनी चाहिए कि कैसे मैं गुरु की कृपा ले सकता हूँ। We are serving Krishna also. We didn't see Krishna. तो हम कृष्ण की भी सेवा करते हैं पर कृष्ण को देख नहीं पाते हैं। But we hear so much about him. पर हम उनके बारे में बहुत कुछ सुनते हैं। And we have a taste for hearing much, much more about him. और हमारा कृष्ण के प्रति सुनने का बहुत ज़्यादा रुचि है हमारी। This is how we see Krishna. तो इसी तरीके से हम कृष्ण को देखते हैं। Yes? Similar questions in the same concern. We read from the Prabhupada's literature that a fish feeds that baby by seeing the fishes, small fishes. Tortoise feed the egg by just meditating. Likewise, is there any some virtual connection between disciples and the Guru Maharaj or Yeah. something like that? Yes. Which can empower us in the Yes. developing more. Yes. तो प्रभु जी का प्रश्न है कि इसी संदर्भ में प्रभु जी का आगे प्रश्न है कि ऐसे प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते हैं कि जैसे जो मछली होती है वो अपने बच्चों को जो छोटी मछली होती है उनको देखकर उनको पोषण देती है, जो कछुआ होता है वो अपने अंडों पर सोचकर उनको पोषण देता है। क्या ऐसा ही है कि जो गुरु हैं वो भी हम अपने शिष्यों से इसी तरह जुड़े हुए हैं? This is the way to get the association of the Guru. हाँ, यही तरीका है गुरु का संग लेने का। To serve the Guru. That's how we can see the Guru. तो उनकी सेवा करके ऐसे हम गुरु को देख सकते हैं। Most of the gurus now in the movement, they cannot be with their disciple all the time. तो ज़्यादातर जो गुरु हैं आज इस आंदोलन में वो अपने शिष्यों के साथ हमेशा नहीं होते हैं। But we have so many shiksha guru around us all the time. पर जो बहुत सारे शिक्षा गुरु हैं जो हमारे साथ हमेशा होते हैं। And these shiksha guru, they remind us of the diksha guru. पर और ये जो शिक्षा गुरु हैं ये हमें दीक्षा गुरु की याद दिलाते रहते हैं। So serving personally, yeah, it's nice to be trained, but everybody is able to be trained by others, and depending on your ability to train others, this particular service is given to you. तो जैसे कि आपकी
हर किसी को किसी दूसरे भक्त से सीखना होता है, और अगर आपके आपके अंदर भी ये गुण है कि आप दूसरों को सिखा सकते हैं, तो आपको ऐसी सेवाएं मिलेंगी। In the same way that you approach your Guru Maharaj with a lot of devotion, some people will also do approach you with a lot of respect because you gave them so much in their life. So, yes, you are a disciple, but you will become a guru also, and that's the desire of Mahaprabhu. तो क्योंकि आप अपने गुरु को आप सेवा कर रहे हैं, तो आपको भी कई लोग ऐसे होंगे जो आपको भी आदर देंगे, और क्योंकि आप उनकी सेवा कर रहे हैं, उनको कृष्ण से जोड़ रहे हैं, तो आपको भी गुरु की तरह देखा जाएगा। यही चैतन्य महाप्रभु यहाँ पे बता रहे हैं। Just pray Krishna when you chant the holy name every day to be able to receive properly the mercy of gurus, the mercy of sadhus, and Krishna's mercy. तो रोज जब आप हरि नाम करें, तो आप कृष्ण से प्रार्थना कर सकते हैं कि कृष्णा के हम आपकी कृपा प्राप्त कर सकें, गुरु की कृपा प्राप्त कर सकें, वैष्णव की कृपा प्राप्त कर सकें। Ladies' question, maybe. माता जी, इसका कोई प्रश्न है? Today we had an equal share in the verses. We didn't speak only of Jagannath Mishra, we had also the verse of Sachi Devi, because both of them are responsible of accepting Nimai in their family. तो आज हमने बराबर सची देवी और जगन्नाथ मिश्र दोनों के बारे में बात करी है, क्योंकि दोनों ने ही श्री चैतन्य की कृपा बराबर प्राप्त करी है। Equal share. बराबर। Okay. Thank you very much. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki jai. So Prabhuji जी का धन्यवाद करें। We'll thank Prabhuji by loudly chanting Hare Krishna, Hare Krishna.